चल रहा है? No, no. I have to go behind. 250 slides हो गए हैं. बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजम. Tonight is our last session and sixth and the last session regarding Hajj Masail. So if you remember, till last night we reached up to obligations of Arafat. So we had started Hajj at-Tamattu, and we discussed that there are 13 wajibat and the details are remaining. Tonight we'll be inshallah covering all these details of these 13 wajibat. So the second one of that is, the first one was that you have to wear ihram from Makkah, better in Masjidul Haram, behind Maqam Ibrahim or Hijr Ismail. This was the talbiyah, niyat and talbiyah you have to recite. Then later on you have to go, so 8th of Zil Hijjah you have done. Then you'll go to Arafat. So the same day normally what do we do? At night we go to Arafat, we spend the night there. So we make sure on 9th of Zil Hijjah, so we are available from noon. By noon we are there. क्योंकि आपको 12 बजे दोपहर 12 का मतलब यानी ज़वाल से लेकर ज़ोहर के टाइम से आप अराफात में मौजूद हों. So you take some precautions and you reach bit early. There is no problem in that. So we discuss Arafat as well. So you spend time. One correction, as Brother Zulfiqar said, that the duration is from Zawal till Ghurub, not Maghrib. So the difference can be of 10 minutes. So after Ghurub, you can leave Arafat. Okay, what should we do? Now we have to go to Muzdalifah. The second wajib is done. There is a ruling actually. It is mustahab for one who is leaving Arafat and going towards Muzdalifah. We have to go to Muzdalifah. So do not recite your Maghrib prayers at Arafat. Delay this. And combine your Maghrib and Isha prayers and recite at Muzdalifah. This is mustahab. And this ruling is not restricted or exclusive to Shias only. Even Ahl Sunnah, they have this ruling that offer your Maghrib and Isha combined together at Arafah, at Muzdalifah. But if you feel that, for example, because of traffic jam or rush, so maybe my namaz will be qadha, so there will be midnight by the time I'll reach. So then, in this situation, you have to recite your salah in Arafat. So this is the third wuquf. This is the third wajib. On 10th of Dhul Hijjah, so 9th you spent, Yom Arafah you spent at Arafat. Now you have gone to Muzdalifah. So what you have to do? Again, wukuf, you have to stay. Part of the night till you have to stay till Tulu, sunrise. You have to stay. So the first thing, you have to do niyyah, that I am staying in Muzdalifah for my this Hajj, qurbatan ilallah, and वहाँ पर आप stay करेंगे. That's it.
Again, you will see large, big signboards which are installed there, purple signboards. It is written that Bidayatu Muzdalifa and Nihayatu Muzdalifa. That Muzdalifa starts here and ends there. So you'll be there with the groups. You won't be moving here and there. So it's not a big deal. So this is the situation. I myself, for me, I should say, the most difficult part of Hajj for me, this is the night actually. खुदावंद मुतआल इंसान के औकात बताता है. All of us will be sleeping on, because in Arafat you have tents, in Mina you have tents, but in Muzdalifa, Mash'arul Haram, there is nothing. Literally you will be on the ground. आपके पास जितना बड़ा भी विला है यहाँ पर, वहाँ पर ज़मीन पर जाकर लेटना है. अल्लाह, जो कुछ भी कर लीजिए. And amazing, amazing. Mash'arul Haram, Mash'ar is from shu'ur, that you have to perceive. आपको understanding हासिल करनी है, मारिफत हासिल करनी है खुदावंद मुतआल की. And this is the best place that you can do ibadah before going back to Makkah. You are preparing yourself. आप अपने आप को prepare करेंगे, इबादत करेंगे. Some ulama, they had the fatwa actually. I'll be reciting this, for example, ayat of the Holy Quran. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. And then when you depart from Arafat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ. Then remember Allah subhanahu wa ta'ala at Mash'ar al-Haram. What does it mean? Some ulama, they gave fatwa actually, that recite Tasbih Fatimatu Zahra Salamullah alayha, it's wajib. It's zikr kathir. So recite Tasbih of Fatimatu Zahra Salamullah alayha. Recite namaz shab there. So you should have your own du'as. आपको पता होनी चाहिए क्या दुआ की जाए. وَذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ. And remember him as he has guided you. So there are two obligations actually when you are at Muzdalifa. Number one, you have to do the niyyah. आपको नियत करनी है. And the second thing, you have to stay. So staying in Muzdalifa for part of the night until sunrise. Now Maulana, is there any exemption? आपने तो हमको डरा दिया, अभी ज़मीन पे कौन सोएगा? So मैं बीमार हूँ, I have a lot of issues and this and that. So there are some exemptions. So exceptions क्या हो गए यहाँ पर? Number one, women, ladies. Accept है. What is the exception? I'm discussing. Number two, children. Number three, the fearful. What does it mean? Al-khaif. जिसको खौफ है, कुछ हो जाएगा भाई, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी. Something is going to happen. So उसको किसी भी चीज़ का खौफ है. Okay, there is exception for that person. The weak, the aged, the sick, or those caring for them, जो उनका केयर कर रहे हैं. अब वो 4 बच्चों को लेके गया, बाप जो है उनकी केयर करने वाला है. So father is the one who is taking care of them. So these people are exempted, or कुछ exceptions हैं. Exempted, I should not say exempted, there is an exception. What sort of exception is this? They are allowed to stay for a short period at night. थोड़ी देर के लिए रुकें. In Arabic we say musamma, यानी कहलाया जाए, it should be said that they stayed. For example, 15-20 minutes. If they stay there, then they can leave Muzdalifa, there is no problem. Even there is no need actually, till sunrise they have to stay there. Now, can they go to Mina? Yes, they can go to Mina. और आप सबको जो है, जो मर्द हजरात हैं और जो जवान हैं, आपको कल जाके पत्थर मारने होंगे ना. They can go at night and they can do Ramya Jamarat at night. There is no problem. Because tonight is what? Eid ki raat hai na? Because tomorrow is Eid. So Eid raat, they can go and do the Ramya Jamarat. There is no problem. This exception is for these people only. Women, children, fearful, weak, aged, sick, and those caring for them. That's it. One mustahab act you can do actually at Muzdalifa. So this is the third wajib of Hajj Tamattu. It is recommended to collect pebbles at Muzdalifa for Ramya Jamarat.
अपने सारे के सारे बुलेट्स यहाँ से लेकर जाएंगे शैतान के अगेंस्ट में जो आपने इस्तेमाल करने हैं. So you have to collect your bullets here. There is a lesson actually in collecting these pebbles. Amazing. Collect your weapons, stones, and finalize your strategies for attacking the enemy within and outside. आपको अगर दुश्मन से लड़ने जाना होगा, कोई स्ट्रेटजी होगी या नहीं होगी? अभी खुदावंद ने मुताल बताएगा जो बुलेट्स कलेक्ट करनी है वो कैसी होनी चाहिए है. अल्लाह अकबर. यानी there should be a strategy if you're fighting against your enemy. And who is the biggest enemy? Your nafs. You should have a strategy against your nafs. How will you control your nafs? कोई strategy है या नहीं है? Don't collect your weapons randomly. आप जंग पे जा रहे हैं, कोई फौजी जो है, सोल्जर है, और कोई भी वेपन उठा के जाएगा. दिस इज नॉट अ केस. वो प्रिपेयर करेगा कौन सा वेपन चाहिए है, जंग कैसी है, दुश्मन दूर है करीब है. These are all the strategies. Now you are going to fight against shaitan. Pay attention when you are collecting your pebbles and use them wisely against shaitan. यानी गिने हुए पत्थर होंगे. There are two things that you have to consider, okay, regarding the stones. Number one, pebbles must be picked within the boundaries of haram. Within the boundaries of haram, you have to collect. But exception है, इसमें भी दो जगह से आप collect नहीं कर सकते हरम में से. One is Masjidul Haram. So inside of Masjidul Haram, you are not allowed to collect. Number two is Masjid Khif. Masjid Khif में भी, it's in Mina. You are not allowed to collect pebbles from Masjid Khif. What about Arafat? Sorry, Arafat is outside the boundary of Haram. So you're not allowed to collect pebbles from Arafat. So the best place is Muzdalifa. Muzdalifa, it is mustahab actually. Number two is they must not have been used for this purpose before. वो चला हुआ जो कारतूस जो होता है वो थोड़ी काम का होता है. बुलेट जो पहले यूज हुआ हुआ हो वो काम का नहीं है. Nowadays it doesn't happen. Why? Because when you'll go to Jamarat, you will see there is a big hole actually. So when they are throwing the pebbles, they are going to that big hole. So no one can go and collect these pebbles actually. So वो यूज हुए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके हाथ में भी नहीं आएंगे वो. Now, recommended क्या है? Recommended is that the pebbles which you are collecting, they should be colored. Recommended, not wajib. Colored, dotted, soft. अब जब मुझे समझ में नहीं आया कि ये soft पत्थर कैसे soft होता है. I don't know. What does it mean? And the size of the fingertip. Fingertip आपकी है ना, the upper part of the fingertip. So the size what you see in the picture is the best size actually. So इस तरीके के होने चाहिए पत्थर. बहुत बड़े नहीं हो, बहुत छोटे नहीं हो. Okay? मुस्तहब है again ये. How many pebbles should be picked? So you will need 49. You will need 49 pebbles. How come? Because on 10th, when you'll go to Mina, you'll be hitting the biggest Jamara Aqaba, the biggest shaitan. So 7 pebbles आपको चाहिए होंगे वहाँ. The next day you will need, on 11th, 7, 7, 7, 21. And the third day you will need 7, 7, 7, 21. So 21 plus 21, 42. 42 plus 7, 49. So you will need at least 49. So कितने लेकर जाएं साथ में? मौलाना एक जो है क्या नाम है पूरी की पूरी बोरी लेकर जाते हैं साथ में. Now it depends upon you. How many do you need actually? So the number which I have mentioned, I've mentioned 70 pebbles. It depends upon you. You want to carry 100? It depends upon you. Okay? So in a water bottle, you can put, you'll get, by the way, the Kafla Salars, they are giving you one theli देते हैं कि आपको जो क्या नाम है shopper type like something they give you. Okay, अब ये क्या हुई भाई? Now, on 10th of Zul-Hijjah, this is the sunrise at Muzdalifa. Now what will you do? आपके weapons तैयार हैं.
जंग होने वाली है, किसके पास जाना है? दुश्मन के पास जाना है. And you have to fight against the enemy. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको प्रिपेयर कर रहा है दुश्मन के खिलाफ, अगेंस्ट उसके. You have to stand. You have to stand. And this is the lesson. Just as the sun rises, now move to fight against your enemy. Day one, prioritize your fight by combating the biggest enemy first. पहले दिन सबसे नहीं लड़ना है. किससे लड़ना है? सबसे बड़े शैतान से, शैतान बुजुर्ग से लड़ना है. इमाम खुमैनी ने भी कहा था शैतान बुजुर्ग कौन है. क्यों उन्होंने कहा शैतान बुजुर्ग? क्योंकि ये तालीम, द तालीम हैज़ बीन गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. गो अगेंस्ट द बिगेस्ट. बिकॉज अगर उसको हरा दिया, ये छोटे छोटे सब नीचे चले जाएंगे. गो फॉर दैट. और वहां जाके इफ यू आर सक्सेसफुल इन सबडूइंग द बिगर एनिमी, द फाइट विद द स्मॉलर एनिमीज विल बी ईजियर. So this is one of the reasons actually that the slogan in Iran, Mark bar this, Mark bar this. Maulana, why they are not saying Mark bar this, others? Baba, they are chota mota shaitan. So the Mark bar is for the biggest. Because अगर ये जाएंगे तो इसके सारे के सारे खत्म हो जाएंगे. So this is the ta'aleem, this is a lesson from Hajj. Okay. Now what will you do? 4th, 5th and 6th wajib on 10th of Zil Hijjah. So you have done wukuf at Arafat. You have done wukuf at Muzdalifah. Now you are moving. Now you are with your weapons. You are going to Mina. So 3 things you have to do on 10th of Zil Hijjah. First thing, you have to throw stones at Jamaratul Aqaba, the biggest. उसके ऊपर आपने फेंकने 7 stones. सेकेंड, उसके बाद क्या होगा? आपने सेक्रीफाइस करने, कुर्बानी करनी है. एंड द थर्ड, आई विल गो इन डिटेल. थर्ड इज हलक और तकसीर. हलक इज शेविंग योर हेड और तकसीर और ट्रिम. अब वो भी डिस्कस करते हैं हम. नाउ दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली. मिना बहुत छोटी सी वैली है. इट्स वेरी स्मॉल वैली एंड फुल ऑफ टेंट्स एंड अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स विच हैपन अनफॉर्चुनेटली, वो यहीं पर ही हुए हैं. तो ख्याल कीजिएगा जब आप वॉक कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. गो ऑल टुगेदर व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्टोनिंग, तो सब साथ मिलकर जाइएगा, एक दूसरे का ख्याल कीजिएगा इसमें. सो दिस इज, यू कैन सी द ब्लू इज द लोअर लेवल एंड नाउ दे हैव द अपर लेवल एज वेल. यू कैन सी देयर इज अ ब्रिज एज वेल. अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी, upper level is not allowed. You're not allowed to go up. If you can see from the right hand side, the entrance is there. Right hand side. So the first pillar is al-ula and the second pillar is al-wusta, the middle one, and the third is al-aqaba. तो किसको मारना है आज? First, second or third? Al-aqaba. You have to go to the last. एंड आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी. यू वोंट बी कंफ्यूज एक्चुअली कि किसको हिट करना है, छोटे को, बड़े को या बीच वाले को. यू विल सी द पुलिस विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्मॉलर वन बिकॉज नो वन हिट्स ऑन दैट डे, द फर्स्ट डे. इवन अहलुस सुन्ना, दे आर गोइंग टू द बिगेस्ट वन. हज के अंदर ब्यूटी ये है, मोस्ट ऑफ द रूलिंग्स ऑफ अहलुस सुन्ना एंड अहल तशय्यो आर सेम. Alhamdulillah. And when I say that small, middle one and the bigger one, it is symbolic actually. If you see the walls are of same size actually. Walls ऐसा नहीं कि कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई no. Walls का size same है, छोटा बड़ा नहीं है. ठीक है. Nowadays it is like this. So it's a side view. And in front you can see this is the wall. This is the wall, yeah. Now if you want to hit, what should you do? So conditions of rami, conditions of stoning. Number 1, you have to do niyyah. Again, this is ibadat. You have to do niyyah that I am doing rami jamarat of al-aqaba, jamaratul aqaba. Okay, for my this hajj, whatever the hajj mustahab or wajib, or if it is niyabat. How many stones? 7.
not 6, not 8. ना कम मारने हैं ना ज़्यादा मारने हैं. Okay. 7 stones must be thrown. So there are 3 things you should remember. 7, ना 6, ना 8. Stones, कोई और चीज़ नहीं मारनी है. एक साहब को देखा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए थे, चप्पल मार रहे थे शैतान को. You're not allowed to hit the चंपल. Stones. Okay? खाक नहीं फेंकनी है, stones फेंकने हैं. Okay? Dust is not allowed. You are throwing dust on shaitan or on this jamarat. No, stones. And it should be thrown. Now I'm discussing this. Therefore, with this condition, it is not permitted to throw anything other than stones. The pebbles should reach the jamara due to throwing. It is not sufficient to simply place them on it. You have to throw. You are not supposed to place. आपने ऊपर जाके रख दिए. Nowadays, Maulana, it's not possible. Why? Because it is far. Because it's far, you have to throw. Yeah. शायद ये पहले ज़माने में ऐसा हो, बहुत नज़दीक में था शैतान, तो उसके ऊपर जाके रख दिए. Okay? The third condition. The stones must be thrown one after the other, not 2 or more at a time. मौलाना मेरे पास टाइम नहीं है, 7 के साथ एक साथ फेंक रहा हूँ. या अली सब के सब फेंक दिया आपने. नो बाबा, 1 by 1, एक एक करके मार रहे हैं. और कोशिश करें जब पहला पत्थर मारें, जब पत्थर मारें तो अपने नफ्स के लिए कहें, ए खुदा मैंने तकब्बुर को अपने से बाहर निकाला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. हर गुनाह को, all the bad sifat you possess, remember this. I still remember last year when I was there, एक ईरानी लेडी थी, उसने कुछ कहा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए. उसने पत्थर लिया, पत्थर लेके कहा या फातिमा, और पत्थर मारा. यानी उन जालिमों को भी याद किया उसने. उन जालिमों को भी याद किया, उन शैतानों को भी याद किया. तो ये आपकी नीयतों पर डिपेंड करता है. अपने अंदर जो मौजूद है, जो सिफतें बुरी हैं, उनको याद कीजिए और उसको बाहर निकालने की कोशिश. बिकॉज इफ़ मैं अंदर से खुद प्योरीफाइड नहीं हूँ तो बाहर के शैतान को नहीं मार सकता. आई हैव टू प्योरीफाई माई सेल्फ फर्स्ट. फोर्थ, द पेबल शुड रीच द जमरा. वो पहुंचना चाहिए. आपका रॉकेट जो आपने चलाया है तो राइफल जो है वो आपका, वो बुलेट पहुंचनी चाहिए. आप बोले इंशाल्लाह पहुंच गया होगा. नो, इंशाल्लाह इज नॉट सफिशिएंट. यू शुड बी शो confident that it has reached. It has reached. Otherwise, what doesn't reach should not be counted. मैंने फेंका मौलाना, वो जो है, so normally those who are jawan actually, those who are jawan, so the distance is almost, for example, those who are here sitting and up to here, the member, the first saf, it is almost like this. So you need some power, huh? So you need some power, it should reach. कभी होता आपने थ्रो किया because of rush, आपका हाथ दूसरे के हाथ पे लगा, नीचे गिर गया. So sorry, it is not counted. तो मौलाना इतने पत्थरों में मुझे कैसे पता चलेगा मेरा पत्थर भी लगा है. अजब क्वालिटी ये है कि आपको आपका पत्थर समझ में आएगा जाके लगा है. In all these stones you will see that it has reached. Amazing, it's a beauty. You'll come to know, you'll be confident enough. Yeah. वो जाके लगा है. Number 5, the throwing of the stones and the hitting of the jamra must be done by a pilgrim himself. आप खुद करेंगे, किसी और से आप जो जाके नहीं करेंगे. इंशाल्लाह मेरी जगह पे चली जाएं आप. Sorry. The stone must be thrown by hand. कैटरपुल नहीं लेकर आएंगे आप. हाँ, और कैटरपुल लेकर आ रहे हैं, प्लास्टिक की जो आप राइफल लेकर आ रहे हैं और so sorry, this is not allowed. हाथ से फेंकना है आपने, हाथ से फेंकना है. So in Tawzil Masail it was written that हाथ से फेंकना है, पैर से नहीं फेंकना है. So I don't understand पैर से कैसे फेंका जाएगा. मुझे नहीं समझ में आया कि पैर से इंसान कैसे फेंक सकता है इतना दूर. I don't know. 7th, the throwing of stones must be carried out between sunrise and sunset. जब सूरज निकलेगा और
सनसेट से पहले पहले आपने अंजाम देना है. बट देयर वॉज एक्सेप्शन. हु वर दीज पीपल हु लेफ्ट मुजदलिफा, विमेन, सिख एंड ऑल दिस पीपल एक्चुअली. सो उनके लिए एक्सेप्शन थी कि वो रात में मार सकते थे. चांद रात को जो है, चांद रात कहेंगे, क्या कहेंगे, चांद रात तो नहीं है, चांद रात तो उसकी होती है ईद रात को. सो ईद रात को जो है, जो गए थे वहाँ से मुजदलिफा से मूव करके गए थे, सो दे वर अलाउड. दैट वाज द एक्सेप्शन फॉर देम. ओके, द स्टोन मस्ट बी हिटिंग द, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बिफोर इट वाज लाइक दिस. दैट वाज द एक्चुअल जमरा, वेरी स्मॉल. नाउअडेज कहाँ गई ये, आपको नजर आ रही जी. दिस इज वेरी बिग नाउ. नाउ कहाँ पर मारे मौलाना? वो असली वाला कौन सा है? वो असली वाला तो गायब हो गया है. आयतुल्लाह सिस्तानी सेज आपको असली वाले पे ही जाकर मारना है. या अल्लाह, मौलाना ये असली वाला कहाँ से लेकर आएंगे? सो दिस इज द रूलिंग ऑफ आयतुल्लाह सिस्तानी. द स्टोन्स मस्ट बी हिटिंग द एरिया ऑफ द जमरा representing its original height. It is not sufficient to hit the extension and elevation recently made. Elevation, the second floor to the bridge, what they have made. It is not sufficient. And so is the upper story of the Jamra recently constructed. This is not allowed. So what should I do? Can you see the oval shaped red part? This is the area. Here you have to hit. मौलाना जवान तो मार देगा, जो क्रिकेट खेलता है तो लगा देगा, हम बूढ़े हो गए हैं. I can't do this. Now what should I do? It's difficult for me. So you can see, oh, it has gone up. If it is not possible to hit the original area only, for you it's not possible for you to go and hit the original area. A pilgrim may in person hit the extended portion. You can go and hit the extended portion, there is no problem. At the corner you can come, you can hit. But with that you have to make a naib who should go and hit in the middle. तो आपने कोई दोस्त को कह लेंगे, वो जो 7 पत्थर मार कर आया है, तो उसी को कहते हैं प्लीज मेरी जगह पे मार के आ जा. So that's what you have to do. You have to hit the other part, but you have to give it to someone that who can go and hit in the middle. Yes. There is no marking. I have made the marking, Baba. This red area, I have marked it. And this is what Ayatollah Sistani says, that count this from the middle actually. And you can go from the middle 1 meter right or left. So you can count, for example, how, so you will come to know, जब पहुँचेंगे, oh, दीवार का जो है middle ये है, I should go and hit this. It's not that difficult. But for someone, if it is difficult, extended area के अंदर जाके वो मार सकते हैं, but उनको नाइब रखना होगा अपना कोई. What if I doubt whether the stone hit the jamra or not? मौलाना जाके लगा या नहीं लगा, मुझे नहीं पता. तो असल ये है कि नहीं लगा है. You should have to consider it didn't hit. Until unless you come to conclusion, हाँ लग गया है. Now the question is this, मौलाना पत्थर मार दिए मैंने, ये 5वां था या 6ठा था? It happens, Baba. Was it 5th or 6th? 5th पे यकीन है, 6th पे क्या है? शक है, डाउट है ना. तो 5th को माने, 6th को छोड़ें. यानी 5th को मान के 2 और मारने पड़ेंगे आपको. So doubt here when hitting the stones, तो आप लोअर नंबर को लेंगे. बट सई और तवाफ के अंदर शक जायज नहीं था, याद है आपको? If you doubt in the number of tawaf rounds and sa'i, it makes the sa'i and the tawaf batil. But here, if you doubt, मेरा 5वां या 6ठा है, consider this as 5th और 2 और मारें. Is it my 2nd or 3rd? Consider this as 2nd और जो है आप आगे जो है 5 और मारेंगे. 5 more you have to hit. मौलाना सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं पहुंचा कहाँ पर? खैमा के अंदर. Now I'm doubting, 6 मारे या 7 मारे? Oh, this is practical, I'm telling you. I know last year actually this happened. There were people like 3 दफ़ा उन्होंने तवाफ किया. इतना शक है. कितनी दफ़ा जाके पत्थर मारे? शक है. So please, जिनको शक है, जो वसवासी हैं, अपने साथ किसी को लेकर जाएं भाई. वो आपके लिए काउंट करके दें. वल्लाही आप मार मार के थक जाएंगे, वो शैतान भी जो है वो भी कह रहा होगा माशाअल्लाह.
ये जो है दीवाना हुआ है सो अपने साथ किसी को ले, अगर खैमे में जाकर सब ख़त्म करके रात हो चुकी है और आपको याद आ रहा है तो खलास बाबा, टाइम निकल गया, अब शक करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ यू हैव डन रमी, ये जमरतुल अक़बा, बड़े वाले शैतान को मार दिया आपने 10th को. अब बारी आएगी आपकी किसी सेक्रीफाइस की. देखें, अगेन देयर इज़ अ लेसन. आपने जंग की किससे? आपने एनिमी से. और जंग के अंदर इफ यू फाइट अगेंस्ट योर एनिमी एंड इफ यू विन द वॉर, व्हाट विल यू डू? यू विल से अल्हम्दुलिल्लाह. सो वन ऑफ द वेज ऑफ थैंकिंग अल्लाह इज टू सेक्रीफाइस. इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर. वन ऑफ द वेज ऑफ थैंकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेक्रीफाइस. अब जो है सेक्रीफाइस करेंगे, कुर्बानी करेंगे. एंड ये खुद एक लेसन है. ए खुदा, आज इस जानवर को कुर्बान कर रहा हूँ, कल अगर ज़रूरत पड़ी तो ख़ुद को तेरी राह में कुर्बान करूँगा. अगेन इट्स अ लेसन. नाउ आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिकली वी डू नॉट गो टू द कुर्बान गाह, टू द बुचरी. वी डोंट गो एक्चुअली, बुचर हाउस पे नहीं जाते हम. सो व्हाट विल यू डू? सो आफ्टर डूइंग द rami, so you will tell your kafala salar. So kafala salar will come to you himself, and you have to tell that please appoint someone on my behalf that he should go and slaughter. That's what they do actually. But you have to tell your niyat. You have to tell your niyat. Why? Because हर एक की जो नियाबत है, तो नियाबत में वो क्या नियत से जो छुरी चलाएगा वो. So if you are doing Hajjatul Islam, so I'm doing this qurbani on behalf of XYZ, he is doing Hajjatul Islam. You understand? तो आपकी नीयत आपको बतानी होगी. So they will slaughter. अब उसमें जानवर कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अरे मौलाना क्या बताने, मैंने कुर्बानी ही नहीं करनी है, किसी और ने करनी है. So this lecture should be given to the काफला सालार. वो जानवर कैसा होना चाहिए, उसकी एज कैसी होनी चाहिए. So these are all details. आई डोंट फील कि मैं आपको बताऊं तो कोई फ़ायदा होगा. तो आप वो स्लॉटर हाउस में नहीं जाएंगे. यू नॉट गो देयर एक्चुअली. ओके, व्हेन यू सेक्रीफाइस, कुर्बानी कर दी, तो लास्ट थिंग इज हलक और तकसीर. आपको जो है क्या नाम, शेव करना है या ट्रिम करना है. दिस इज द लास्ट थिंग फॉर 10th of Dhul-Hijjah, for Eid day. You are in Mina. So when to perform this? Okay, sacrifice 10th of Dhul-Hijjah. Okay, sorry, samahani. Taqseer or halak. When to do this? After sacrifice. कुर्बानी के बाद आपको ये करना होगा. Where to perform? In Mina. Outside of Mina, you're not allowed. Sorry, you can't do. Maulana, I have gone to Makkah. Can I do this there? Sorry, you're not allowed. You have to come back and यहाँ पर आकर आपको करना है. ना कोई मजबूरी हो कुछ हो, इट्स अ डिफरेंट केस. बट प्रैक्टिकली व्हाट हैपन्स आफ्टर रमी जमरात, यू विल कम बैक एंड यू विल बी सिटिंग एंड यू विल बी वेटिंग फॉर व्हाट? फॉर द कुर्बानी. यू विल गेट द न्यूज़, माशाअल्लाह योर कुर्बानी इज डन. देन गेट रेडी फॉर हलक और तकसीर. सो यू विल बी इन मीना प्रैक्टिकली. नाउ अगेन देयर इज अ लेसन इन हलक और तकसीर. Battery is getting low, wallahi. So halaq or taqseer, that I am sacrificing my hair, crown of my beauty in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. पहले ज़माने में one of the signs of these servants and गुलाम, वो bold होते थे, गंजे होते थे, बाल नहीं होते थे उनके सर पे. खुदा मैंने ये करके बताया कि मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं किसी और का बंदा नहीं हूँ. Halaq or taqseer, what should I do? For gents, if they are doing their first Hajj, Hajjatul Islam, of khud ka kar rahe hain, if it is for himself or niyabat of someone and Hajjatul Islam, then they have to do what? Halaq, shaving. If it is not Hajjatul Islam, then it depends, you choose one thing. But recommended kya hai? Halaq is always recommended. Shaving your head is recommended. For ladies it is taqseer, not halaq. Is it sufficient for a bald person with limited hair to shorten those hair strands?
भाई मेरे सर पे बाल ही नहीं, मौलाना 2-4 तो घूम रहे बल सर के ऊपर बाल. So what should I do? Can I trim this? Yes, you can trim. अब उसको क्या आप काटेंगे, उसको क्या उड़ाएंगे? तो थोड़ा सा आप उसको काट दीजिए, काफ़ी है आपके लिए. Is it permissible for a muhrim? I'm a muhrim. I'm in ihram. Can I do the taqsir or halaq of someone else? Sorry, you're not allowed. You're not allowed. You can't do this. पहले खुद का करें. When you are out, then you can do the halaq or taqsir of someone else. If he does this, आपके बाल उड़ भी गए, तो it is not sufficient for you. It is not sufficient. Is it permissible to perform halaq with 0 level hair trimmer? Ayatollah Sistani says allowed. Allowed. There is no problem. But better क्या है? That you shave with blade. Shaving is better. But 0 machine लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं. There are some mustahabbat. I didn't get the time actually to do the translation. ما هي آداب الحلق في الحج? कोई अदब है या नहीं है? There are some etiquettes. Yes. يستحب في الحلق أي يبتدي فيه من الطرف الأيمن कि मुहरिम जो है वो अपने राइट साइड से जो है बाल को काटना शुरू करे. दिस इज मुस्तहब. वहीं यकूल हीन अल हलक कि एट द टाइम ऑफ ट्रिमिंग और शेविंग ही शुड रिसाइट दिस अल्लाहुम्मा आतनी बिकुल्लि शअरतिन नूरन यौमल क़ियामा. खुदावंद मुताल हर एक बाल के बदले में खुदावंद मुताल रोज़े क़यामत तू मुझे नूर अता करना. दिस इज द दुआ. नंबर 2 आई युदफन शअरुहु फी खैमतिही फी मिना. अपने बालों को जो है मुस्तहब है मिना के अंदर जहाँ खैमा है उसके आसपास कहीं उसको दफन कर दें. इट इज़ मुस्तहब अगेन. थर्ड अन यअख़ुज़ मिन लह्यतिही व शारिबिही व युक़ल्लम अज़ाफ़िरु बअद अल हलक़ कि आपने सर के बाल जब काट लिए उसके बाद थोड़े से जो है मुस्तश बियर्ड और थोड़े से नाखून भी काट लें. मुस्तहब है. It's not wajib. Now I'm finishing. This is the last slide. So 8th Zil-Hijjah we have done ihram. 9th at Arafat. 10th at Muzdalifah we have done. 10th at Mina, Ramya Jamarat of Aqaba, sacrifice and halak we have done. Now you have what you have to do. You have to stay in Mina. Next day, on 11th of Zil-Hijjah, you can see only one thing what you have to do. You have to do the Ramya Jamarat of all the 3 shaitan, symbolic shaitan. तो छोटे, बीच वाले और बड़े वाले सबको जाके आपने साथ मारना है. So what will you do? Then you come back to your khayma. Then on 12th, then again you have to stay for the whole night. Actually, I'm going to discuss कितना आपको रात को रुकना है. So how many nights are you going to spend at Mina? 2 nights. Is it wajib to spend the whole night? No. Ayatollah Sistani says no, this is not wajib. You have to spend half of the night. What does it mean half of the night? ग़ुरूब से लेकर फज्र तक. If it is 12 hours, तो डिवाइड करें. अगर 6 o'clock को ग़ुरूब है और 6 o'clock को फज्र का टाइम है, so what will be the half? 12 बजे. So you choose the first one or the second half. Okay, first half or the second half. तो अगर आप चाहते हैं, because I'll be discussing the next thing, कि if you want to spend the whole night, it depends upon you. But again, you have to do niyyah for the baytuta, for staying the whole night or the half of the night, you have to do niyyah. So which part of the night I'm choosing, the first or the second or the whole night? So you have to do niyyah. 12th को जो है, आपने क्या करना है? 12th को आपने फिर से रमी जमरात करने हैं 1, 2, 3. बट आपको वहाँ पर रात नहीं रुकनी है. आपको क्या करना है? ज़ुहर के बाद जैसे अज़ान ज़ुहर होगी, you can leave. You can leave. But if you stay there till Maghrib, till Ghurub, till Ghurub, if you stay there, आपके पास वो 12th जो है वो उस रात को भी रुकना पड़ जाएगा आपको फिर. And the next day again you have to hit shaitan, all 3 of them. So Maghrib से पहले आपने वहाँ से निकलना है. Now where will you go? You will come back to Makkah. मक्का के अंदर कितनी चीज़ें बाकी हैं आपके पास? From 9, 10th, 11th, 12th, 13th. Tawaf of Hajj Tamattu. Then Salatu Tawaf of Hajj Tamattu.
then sa'i, then tawafun nisa and salate tawafun nisa. So these 5 things, 9, 10, 11, 12, 13. So after performing on the 10th of Zilhijjah, you can see 10th of Zilhijjah in Mina, after performing halaq or taqsir, if you want to leave Mina and you want to go to Makkah and perform all these 5 wajibat, you can do this. But what is important? You have to come back to Mina to spend half of the night. Now it depends upon you. You want to choose the first half or the second half. Maulana, itna darde sar kaun karega? Let me sit here, and once I'll go back to Makkah, then I'll do all this. There's no problem. There is no problem. Because till the end of Zil Hijjah, you can perform this tawaf of Hajj Tamattu, Salat Tawaf, Sa'i, Tawaf Nisa, and Salat of Tawaf Nisa. So it depends upon you. So normally what happens ke the first day becomes a bit tiring ho jata hai. The second day on 11th of Zil Hijjah, because there is only one wajib there. तो आप वहाँ पर रम्य जमरात करके वहीं से निकल जाते हैं. Because in the morning you can do this, and in the morning you can leave Mina and go to Makkah. तो आपके पास पूरा दिन होता है. You can perform all your wajibat and then come back by, for example, by midnight, before midnight. So you can do this thing. So Alhamdulillah, यहाँ पर आके हमारी तमाम जो है हज की चीज़ें कंप्लीट हुई. मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हमारी जो है इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएँ. One thing, as we discussed before, is regarding your jama'ah, Salatul Jama'ah. When you are in Makkah or Medina. Makkah or Medina, if you are in Makkah or Medina, you have a choice. You want to perform full 4 rakat, or अगर आप सफ़र पर हैं 10 days नहीं स्टे कर रहे हैं तो फिर आप जो है आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं. आपके पास चॉइस है, कोई कुछ भी जैसे पढ़ना चाहें. जमाअत नमाज के अंदर अगर अहले सुन्नत के पीछे पढ़ रहे हैं, आप जमाअत आप पढ़ सकते हैं, नमाज उनके पीछे पढ़ सकते हैं. बट यू हैव टू रिसाइट एवरीथिंग. लाइक हम यहाँ पर सूरह अल-हम्द नेक्स्ट सूरह यू आर नॉट रिसाइटिंग, बट व्हेन यू आर बिहाइंड अहले सुन्नत यू हैव टू रिसाइट एवरीथिंग. Can I recite Namaz Jum'ah, Salatul Jum'ah? Sorry, Salatul Jum'ah is not sufficient. Is not sufficient. Okay, you can go and attend, for example, you can offer your own namaz, but after that you have to offer Salatul Dhuhr. What about Taqiyya, Maulana? In Makkah there is no problem. Why? Because there are tiles. Tiles है वहाँ पर, tiles संगे मरमर है. So on संगे मरमर you can perform sajda. But in Medina, in Masjid Nabawi, there are some areas actually without carpet. सही है, तो आप वहाँ पर आप नमाज उस पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए. लेकिन I have seen actually the problem comes here. Now you are standing, and then when the for Jama'ah people are standing, and now you have to move. Now you are not moving. Why? Because I moved, then I have to go to the carpet. Baba, leave it, there is no problem. You are in a state of taqiyya. You are in a state of taqiyya. So should I take my mohor and all? Baba, if you take your mohor, sometimes it becomes very problematic. One thing you can do, for example, if you have ring of aqiq and it is flat, Ayatollah Sistani allows this to do sajda on your aqiq. There is no problem. So you can put your hand and you won't. If leave everything because of taqiyya, you can do this. There is no problem. You can offer your salah on the carpet. There is no problem. But one thing you have to remember, okay, sometimes, for example, Salatul Maghrib, so Azan Maghrib of Ahl Sunnah is bit early. तो वो अगर जमात शुरू हो जाती है टाइम से पहले, हमारे टाइम से पहले, it is not sufficient then. Maybe you can do the niyat of your qaza namaz or anything, then you can recite. But it won't be sufficient before time. एक और चीज़ जो है, many times what do? They recite wajib sajda. So in wajib sajda, what you are supposed to do actually, you have to go to sajda. Wajib sajda की आयतें पढ़ते हैं. You will go to sajda. We are not allowed to recite those surahs actually, those ayat of wajib sajda. As soon as you go to sajda, your namaz is gone. Your namaz is batil. So namaz is gone. So वो एक चीज़ें हैं, कुछ आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है.
There are some things you have to take care. For example, here, if you're coming late, you are shouting, Ya Allah, to Maulana. They don't do this actually there. They don't do this actually, Ya Allah, Ya Allah. So there are some things. Or for example, after completing your prayers, so we do Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. There is no need actually of doing this. It is mustahab. Understand? Then qunut is not wajib. Okay, qunut is not wajib. If you want to leave, if you feel it's difficult, leave this. There is no problem in that. हाथ खोल के नमाज पढ़ने में कोई problem नहीं है, because Maliki, you will see they are praying like this. कि वो अपने हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं. इंशाअल्लाह ताला खुदावंद मुतआल हमारी इबादत को कबूल करे. अगर किसी से कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं. I'm here. Okay, I'm switching this off, this mic, so I'll be there with you. You can ask some questions. अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा. इल्तिमास से दुआ. खुदा हाफिज़.